Screening of the documentary. Can we have the lights off and play the trailer of the documentary first, please? Can we close the gate? My fellow citizens, there is genuine and justified anger at the ghastly crime of gang rape in Delhi. We will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. 2012 के बाद मीडिया हाइप होने की वजह से लोगों का अवेयरनेस साजिश का एक जाल रेप केस में लोगों को फंसाने का एक फतेहाबाद में झूठा बलात्कार का आरोप There are many more false rape cases. We also need to ask at this point if our rape laws need to be re-looked at to prevent misuse. मेरा नाम प्रिंस है। मेरे ऊपर एक फेक रेप केस का इल्जाम लगाया गया था। मेरे ऊपर एक लड़की ने आरोप लगाया है कि मैं इसको शादी का झूठा झांसा देके 5 साल तक रेप किया हूँ। It's become very easy for a woman to turn around and say, I was raped. एक ही लड़की होती है, वो मल्टीपल एफआईआर दर्ज करवाती है अलग अलग लोकेशंस पे जाकर के अलग अलग थाने में, लेकिन कंटेंट्स जो होते हैं सेम ही होते हैं। Women can go to any level to extort, to manipulate, or for vendetta. People are into affairs. When they get caught, then there's a rape case. A woman says, no, I didn't consent. No evidence required. The man is finished from word go. इस केस की वजह से मैंने 5.25 साल जेल में बिताए। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है और फिर उसकी सजा 3-3 साल तक मिलती रही, ये कहाँ का न्याय है? मेरे भाई को एक टेबल से बिल्कुल ऐसे नीचे हाथ रख के बंद कर रखा था। वो ना ऐसे बैठ सकता था, ना ऐसे लेट सकता था। पूरी रात पुलिस वाले ने उसे उसी कंडीशन में रखा। मेरे ख्याल में 100 क्लिप तो यूट्यूब के ऊपर पड़ी। उन 100 क्लिप में हर जगह हम आज भी अक्यूज भी हैं, ये नहीं कि हम इनोसेंट हैं। Extortion need not be just by showing a gun or shooting somebody or threatening somebody. The false allegations of 376 were their weapon in this case. मेरे नाम के आगे जो रेपिस्ट का टैग लगा है, इस जन्म में तो कभी नहीं इसको भरपाई कर सकूंगा। एक गन शॉट के जैसा है, बुलेट गई, काम खत्म। Every man is vulnerable if the law can be misused to make you suffer. You could just be picked up on a fake case and your whole family will have to go through the massive ordeal. And that has to stop here. While we are so proud of the way that we are protecting our daughters, don't you think we equally need to protect India's sons? नहीं अपनाएगा तो रेप के केस में तो अंदर जाएगा ही जाएगा। Good afternoon, everyone. To all those present in the audience today, our esteemed chief guests, guest of honors, and all the audience. Thank you so much for coming on a Sunday afternoon to watch a documentary film like this. My name is Deepika Narayan Bhardwaj. I'm the director of India's Sons. This is my second feature-length documentary film. Before this, I had made a documentary called Martyrs of Marriage, which was on 498 and Misuse.
It came on Netflix, and we had screened the documentary at Judicial Academy, to Netflix. Why did I make India's Sons? My journey into looking at the misuse of provisions meant for protection of women and very, very benevolent and rightful provisions made for safety and security of women in this country began with a personal experience. When I saw white lies told in front of the court, in front of the police, and the helplessness of an innocent person to say that we did not do this made me start my journey into this space. 2012 is when I started making Martyrs of Marriage. And that's the year when the most tragic Nirbhaya episode happened. While I had started making the film on 498A, what I saw after the amendments in the provisions was abuse of 376. It makes me fear a lot, because we had a judgment where the Supreme Court has called misuse of 498A as legal terrorism. It would be a very scary day if the Supreme Court gets flooded with false rape cases, because women who go through sexual abuse need every inch of protection and concern and hearing whenever they go to the police station. But at the end of the day, we are human beings. There's a saying, if the cry of wolf is made very often, then nobody will come for help when the actual wolf appears. India's Sons is not about men versus women. It's about justice, and I hope all of you would take this documentary exactly in that regard. In our Mumbai screening, we had Justice B.N. Sri Krishna, former judge of the Supreme Court of India. In our Delhi screening, we had members of Parliament, Srimati Sonal Mansingh, Shri Anubhav Mohanty, and various other dignitaries. And so far, we have received immense support for this documentary film. I would leave it on the audience today in Jaipur, which is a very important city for us. Shri Dinesh Emin is here with us. He's a part of the documentary, and a racket that they had busted makes, you will see in the documentary. I'm extremely thankful to our chief guest, Justice Shri Banwari Lal Sharma ji, for having joined us today. I request you all to give a big round of applause to all these gentlemen. Justice Shri Alok Sharma ji, retired judge, Rajasthan High Court, Shri Dinesh Emin, ADGP, ACB, Shri Anurag Sharma, former AAG in Rajasthan High Court. Thank you, Sunita Meena ma'am, for coming. She's additional DCP. She's here with her near squad also. It's quite an emotional moment for us now to have you amongst us, because this is an entire opposite side of your regular work. Thank you so much. Mukta Arora ma'am is also with us today. She's with UN Women. Thank you so much, all of you, for joining us today. And before we begin, I would like to invite now on the stage the man without whom this film would not have been made possible, my producer, Shoni Kapoor. And before I invite him, I have to tell you that working on men and the problems that they are facing is a very, very challenging thing, because it's very difficult to tell people, society at large, कि आदमियों को भी कोई दिक्कत हो सकती है. लार्जली लोगों को लगता है कि आदमियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे आज के समय में हैं पुरुष जिनको इश्यूज फेस करने की से जूझ रहे हैं. So, Martyrs of Marriage was made in extreme financial crunches. I'm extremely thankful to this man who came and supported India's Sons, Shoni Kapoor. Good afternoon, gentlemen. इकबाल का एक शेर है, वक्त की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमान. एक लड़की के द्वारा 7 रेप केस, 9 रेप केस, 11 रेप केस दर्ज कराया जाना. एक लड़की के द्वारा रेप केस सिर्फ इसलिए दर्ज कराया जाना क्योंकि
उसके घर के आगे कोई कूड़ा डाल गया है या उसने किसी के घर के आगे कूड़ा डाल दिया और उसने ऑब्जेक्ट किया है, क्या कानून इसलिए बना था? क्या इस तरह का दुरुपयोग होता रहेगा तो कोई भी आदमी सेफ होगा? और जब एक आदमी या एक स्त्री के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो क्या वही आदमी और वही स्त्री उससे प्रभावित होता है या उसका पूरा परिवार भी प्रभावित होता है? ये कुछ मुद्दे हैं। आज की तारीख में, या थोड़ा पीछे जाऊं तो मैं भी 498 से पीड़ित रहा हूं। मेरे ऊपर एक झूठा केस था 498 का। तो बहुत बार मैं पुलिस स्टेशन गया और विक्टिम्स के साथ, तो एक बात बहुत मैंने पुलिस वालों के मुंह से सुनी। लड़की आती थी, कहती थी कि मुझे दहेज के लिए तंग किया गया है, प्रताड़ित किया गया है। तो मैंने अक्सर पुलिस वालों को या काउंसलर्स को ये कहते हुए सुना, अच्छा वो तो ठीक है, रियल मुद्दा क्या है वो तो बताओ। आज कमोबेश रेप के लॉस के साथ भी वही होने वाला है, वही हो रहा है। जब लड़की रेप का केस लेकर पुलिस स्टेशन में जाती है तो कभी कभार ये भी सुनने को मिलता है, अच्छा रेप हुआ हो तो ठीक है, असली बात क्या है ये तो बताओ। तो क्या एक ऐसा हाइनस क्राइम जिसके लिए सजाए मौत भी है, मैक्सिमम पेनल्टी इज पेनल्टी ऑफ डेथ, उसके लिए सोसाइटी का पुलिस का ऐसा हो जाना, उदासीन हो, ठीक है ये तो हुआ है, असल मुद्दा क्या है, क्या ये ठीक है? और इससे भी बड़ी बात मैं ये करता हूं कि औरत के साथ अत्याचार हुआ, उसे न्याय मिलना चाहिए, पर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान इज ऑन रिकॉर्ड टू से दैट 50% ऑफ रेप केसेस आर फॉल्स एंड वेरियस डेटा सुजेस्ट सो। तो उस आदमी का क्या जो 3 साल 5 साल जेल में रह गया है, उनके लिए भी कुछ न्याय होना चाहिए। एक कोशिश है हमारी, और लोग कहते हैं कि एक आदमी मूवी से कुछ नहीं होता, पर दुष्यंत कुमार का एक और शेर मुझे याद आता है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। प्लीज एंजॉय द मूवी। थैंक यू। In case you like the documentary, we would request you to please spread the word on social media, #IndiaSons. When you leave, please record the feedback outside. May I now request everyone to put their phones on silent. Lights off. Can we begin the documentary film, please? My name is Karan Oberoi. I come from a family of soldiers. My grandfather was an IPS officer. My father, a decorated war hero, then served the army and retired as a brigadier. Like most armed forces families, discipline, morals, respect have been ingrained into us since childhood. We've been a very close-knit family. My mother raised me and my sister as equals. So treating women as equals and honoring their rights hasn't been a moral obligation, but the core of being the person I've always been. Even though my lineage is of war heroes, when I was quite young, my creative soul took the better of the soldier soul, and I became an actor and a singer.
I started my career as a model and then went on to do soap operas on TV. In early 2000, I tasted the epitome of my success with my band, a band of boys. We gave back-to-back platinum hits and traveled the globe doing concerts. We really enjoyed all the love and adulation that we got from audiences all across the globe. For all the years I've been in Mumbai, my life has always been about my work, my commitments, and improving myself as an actor and a singer. However, this incident in 2019 changed my life forever. Television actor Karan Oberoi was arrested for allegedly raping and blackmailing a woman in Mumbai. Karan Singh Oberoi को गिरफ्तारी के बाद 9 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। The day I stepped my foot inside the jail for a crime I had not committed, I decided I would speak, no matter what. Every man is vulnerable if the law can be misused to make you suffer. You could just be picked up on a fake case and your whole family will have to go through the massive ordeal. And that has to stop here. All those stories, all the people who are suffering because they don't have a voice, I am their voice. I'm going to carry forward this, that no man in this country should ever suffer for the fault of this. No innocent man will be put behind bars because I will tell their stories. Rape. A word that haunts us to our very core every time we hear it. A crime that's haunted Indian conscience for decades, but more so after 16 December 2012, when a young paramedical student was brutally gang raped by 6 men in a moving bus in Delhi and then left to die. The gory episode shook the nation and also me personally. It was a crime, the brutality of which one had never heard before. I supported the movement wholeheartedly because it was the right thing to do. People were tired of the lethargy of the system to deal with these crimes and punish such monsters, and that's why everyone was out on the streets. In the wake of the protest organized across the country, the kinds no one had ever seen before, the government acted swiftly. My fellow citizens, there is genuine and justified anger and anguish at the ghastly crime of gang rape. We will examine without delay not only the responses to this terrible crime, but also all aspects concerning the safety of women and children and punishment to those who commit these monstrous crimes. Justice Verma Committee delivered its report within a month, suggesting a complete overhaul in laws related to sexual crimes against women. Rather than digging deep into the problem, assessing the lacunas in the judicial and investigative processes, and thereafter proposing a solution, the government
preferred to amend laws overnight, almost as a knee-jerk reaction to public outrage. See, the criminal law is something which you should not necessarily fiddle around with just as a knee-jerk reaction because of one bad case or the other. There is a saying in law that hard cases make bad law. Nirbhaya was one such incident. Criminal Law Amendment Bill 2013 came into force on February 3rd, 2013. Definition of rape now included both penetrative as well as non-penetrative forced sex. Special provisions were added to prosecute people in position of authority, and maximum punishment extended to 20 years, life and even death. Section 166A of IPC was amended, introducing punishment for police officers who wouldn't register such a crime. Fast-track courts set up across the country to try these cases in the shortest time span. Evidence Act was also amended to the effect that if a sexual intercourse is proven, it will be presumed that the woman did not consent, if she says so in her testimony. Statement alone of a woman can now lead to conviction in rape cases in India. Though not on papers, but post the 2013 amendments, the burden of proof in all practicalities has now shifted to the man to prove that he did not rape. Obviously, these changes were done to deter criminals from committing this heinous crime. The intent was definitely right. But the outcome? लड़की ने ऐसे ही अपनी मीठी बातों से साजिश का एक जाल फर्जी रेप केस में लोगों को फंसाने का एक इस्लामाबाद में झूठा बलात्कार का आरोप There are many more false rape cases. We also need to ask at this point if our rape laws need to be relooked at to prevent misuse. The rape law, like many other laws in India, is being misused rampantly, and the tragedy is that while genuine victims of sexual violence, sexual abuse and rape rarely get justice, but it lends itself to easy misuse. 2012 के बाद क्या हुआ कि मीडिया हेल्प होने की वजह से लोगों को अवेयरनेस काफी है कि किस तरह से इन केसेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल का मतलब ठीक इस्तेमाल तो ठीक, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। People are into affairs most of the time. When they get caught, then there's a rape case. We feel that there is a lot of crime happening against women. We are forgetting, the courts are forgetting one very important aspect, that there is a likelihood of these particular rape cases increasing because of the false cases. False accusations of rape have increased drastically in India in the last few years. It's a problem that even courts have taken cognizance of. In fact, a judge in Delhi asked that if women who file rape cases are called rape survivors, shouldn't men who are honorably acquitted be called rape case survivors? Not just our courts, data available from researchers and national agencies also tell a shocking tale of terrible abuse of a thoughtful provision. In 2013, when a prominent newspaper, The Hindu, analyzed data from various courts in Delhi, now also known as the rape capital of India, in the 600 cases it was found that over 40% dealt with consensual sex, usually involving elopement of young couples, where the girl's parents would charge the boy with rape. Another 25% dealt with breach of promise to marry, which means over 65% cases dealt with consensual sex. 1/5 of the cases were wound up because the complainant turned hostile. Conviction rates were high where a stranger or a family member was an accused. As per a report by Times of India, acquittal rate rose from 46% in 2012 to 75% in 2013, essentially due to false rape cases. In 2018, Rajasthan High Court was informed by the state police
that 43.3% of rape cases investigated in that year turned out to be false. A well-meaning criminal section is now increasingly being used in situations of unkept promise of marriage, young couples eloping, soured relationships, recovery of money or property, extramarital affairs, and honey traps. One should make a distinction between violent rape where there is a total absence of consent. That definitely has to be punished. But now you have so many situations which all come in under the definition of rape. For instance, if two teenagers run away and have sex. Now, because the statutory age of consent has gone to 18, any 16-year-old, 17-year-old child experimenting with sex becomes a rapist. We are now brought in within the ambit of criminal law a lot of stuff which otherwise was not criminal. I'm not saying that it was moral, that it was morally right, but keep morality out. Decide as a society what kind of people you want to criminalize, and when you criminalize one individual, with that you subject an entire family. And it's not only the accused family which gets sucked in. It is the complainant family also that gets sucked in. ये assumption करना कि कोई भी महिला है अगर वो consent के बारे में जो बोल रही है वही सही है, this is not correct. I don't agree with it. क्योंकि आज के समय में we can't say कि कोई महिला इसलिए सही बोलेगी और कोई पुरुष इसलिए वो झूठ बोल रहा होगा, और नहीं हमारा लॉ इस आधार पे बना है कि महिलाएं सच बोलती हैं और पुरुष झूठ बोलते हैं. हमारा लॉ सिर्फ एविडेंस पे बना हुआ है, और एविडेंस में इस तरह के चेंजेस ला देना, दिस इज नॉट करेक्ट. आई थिंक हम लोगों का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर वो आदमी झूठ बोलता है जो या तो मजबूर होता है या फिर उसके पीछे कुछ और मोटिव होते हैं. तो वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है. One would have imagined that post-strengthening of the laws and the system becoming so strict, more rapists would have been convicted, more criminals would have been booked. But what we're actually seeing is quite the opposite. While percentage of people convicted versus people arrested from year 2007 to 2012 was 20%, it dwindled to 15% between 2013 and 2018. Which basically means 85% men and women arrested under charges of rape from 2013 to 2018 were found not guilty. Most rape cases in India today are that of rape on false promise of marriage. Segmented separately under NCRB, these cases have risen from 22.1% of total registered cases in 2015 to a whopping 51% in 2019. In some states, such cases form 55 to 85% of total rape cases. It defies comprehension how police have allowed countless women to book cases under this charge. That he promised to marry me, he didn't, we were living together, and he's been raping me for 3 years. Now, no woman can be raped for 3 years, especially if she's not being kept captive, especially if she's admitting there was a live-in relationship. To equate non-marriage with the brutality of what a forced rape is and put those in the same bracket and treat such two men who've committed two different versions of rape on the same platform is unacceptable. To have premarital sex is a choice. If women are so concerned about the marriage aspect and equate that to sex, well then they should get married first and then have sex. Here it can be consensual. That yes, I had sexual intercourse, that's why there are no marks of injury on my body. That's why there are good chats between us. The SMS messages or the WhatsApp conversations or the emails, that's why we've been roaming around, that's why the hotel stays are there, pleasant hotel stays. So it's the easiest allegation to level. And what evidence of this promise needs to be presented? It's her word against your word.
मेरा नाम सर, मेरे पर एक लड़की ने आरोप लगाया है कि मैं उसको शादी का झूठा झांसा दे के 5 साल तक उसका रेप किया हूं, और इसके अंदर मैं अरेस्ट हुआ था। 1 महीना मैं जेल में था और बेल पे मैं बाहर निकला हूं। जैसे ही हम जेल प्रिजन जो थाना जेल है मुझे वहां लेके गए, वहीं से टॉर्चर और हरेसमेंट चालू हो गया। लोग शक्ल से पहले आईपीसी सेक्शन देखते, 376 वाला आया अंदर, तो उसको वो हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। जैसे ही एंट्री के अंदर तो पहले तो तुम्हारे पूरे कपड़े निकाल, जहां पर पूरे भरे हुए, इतने भरे हुए कैदी के पूछने की बात नहीं, सब एकदम जंगली के जैसा। डार्क रूम रहता है और उसके अंदर फैन वगैरह, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं, और पानी की भी काफी इतनी प्रॉब्लम है कि आपका वो जो 100 स्क्वायर फीट का जगह है उसी के अंदर वॉशरूम है, और वॉशरूम में पूरी दीवारें नहीं है, सिर्फ हाफ दीवार है, और वहां पर पानी नहीं, और बाथरूम कभी कभी बहुत ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होकर बाहर आता है, और बहुत टॉर्चर हद से ज्यादा। जहाँ पे एक बैरक में कैपेसिटी होती है 50 की, तो वहां पे 300 को रखा गया। तो सोचे कि 50 की जगह पे जब 300 रखा जाता है तो वो क्या पोजीशन होता है। जब हमें सोना रहता है तो अगर समझो मैं सोया हूं इस तरह से, तो मेरा मुंह रहेगा तो मेरे मुंह के सामने दूसरे का पैर रहेगा। एक वक्त आ गया कि जहां पे मेरी आत्मा मेरी बॉडी को छोड़ दी, मतलब मैं आई वाज जस्ट लिविंग लाइक अ डेड बॉडी। सोच रहा था कि मैं छूटूंगा कि नहीं छूटूंगा, क्योंकि बाकी के कैदी जो है वो हमेशा डराते, नहीं 376 में आया तो तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। यहां देखो दूसरे कैदी 3 साल 4 साल से, तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स वो मुझे भी आ गई। वहां पे मुझे गुस्सा आया काफी, और सोचा कि अब नहीं रहना इस दुनिया में, क्योंकि बाहर जाऊंगा फिर ह्यूमिलेशन होगा। तो सुसाइड करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि मतलब जो रेपिस्ट होगा उसको ही वो गिल्टी फील हुआ और वो ही जाके सुसाइड करेगा। एक इनोसेंट आदमी भी सुसाइड कर सकता है। I was picked up by the police as if I was a dreaded terrorist, a hardened criminal. They arrested me on the same day an FIR was filed against me. No evidence, no investigation, no questioning. I hadn't even had a traffic violation on my name before this. You know, statistics do not speak of human suffering. What a jail is, what arrest means, can only be understood by a person who goes through it. It's a nightmare to be in the middle of hardened criminals, especially when you know you've done nothing wrong. You feel choked every minute. The agony one experiences can't be expressed in words. One day in jail feels like a lifetime. People say false accusations are minuscule as compared to the real cases. But does that make my pain less? Or anyone who's going through this emotion is painless? How can the system be so blind? At the cost of what? Innocent lives. Is that justified in any civil society? It's not.
मेरा नाम प्रिंस है। मैं सापला का रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा है, 2 सिस्टर है। घर में सबसे अच्छी तरह रहते थे सब हम। ये भी अच्छा था, पढ़ाई में भी अच्छा था, हर एक चीज में मतलब इंटेलिजेंट था। भाई यही सोचता रहता था रात दिन, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मकान लूंगा, गाड़ी लूंगा बहुत, और अपने माँ बाप को बहुत सुविधा दूंगा। मेरे मम्मी पापा का ड्रीम था कि मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट बनूं और उनके सारे सपनों को पूरा करूं। और लाइफ बिल्कुल स्मूथली चल रही थी कि सडनली ये केस हो गया और जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। तेरह 9/2013 की बात है। कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि आज न्यू मूवी रिलीज होने वाली है, तो चलो मूवी देखने चलते हैं। तो मैं सत्यम मॉल, स्काईटेक मॉल है रोहतक में, तो वहाँ पे हम सारे फ्रेंड्स मूवी देखने के लिए चले गए। तो इसी बीच मेरी मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास कि तू जल्दी से सापला आ जा घर पे। पड़ोस में जो ये सब्जी की दुकान कर रखी है जिन्होंने, ये कह रहे कि तुम्हारी दुकान पे जो लड़का काम करता है उसने हमारी लड़की के साथ गलत काम कर दिया है। इस केस में उस लड़के की बेल होगी और जिसके बाद हमारा थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, वो कहने लगे कि तुमने करवाया ये सब, जिसके लिए उन्होंने हमारी 19/9/13 को 7/51 की लड़ाई झगड़े की जो होती है उसकी FIR कटवा दी, जिसमें हमें हाथों हाथ बेल मिल गई, मेरे फादर को और मुझे। फिर इस केस की FIR कटने के 20 दिन बाद मेरे अगेंस्ट दोबारा एप्लीकेशन लगाई जाती है, जिसमें पहले मेरा कोई जिक्र नहीं हुआ कभी। उसमें अब सारी स्टोरी चेंज करते हुए वो लड़की का फादर यूँ कह रहा है कि मेरी लड़की डरी हुई थी और इसलिए उस लड़की के दोबारा बयान कराए जाए कोर्ट में। फिर उसके 2/10/2013 को उस लड़की के दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं। उस लड़की की भी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, उस लड़की की मम्मी की भी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। जो स्टेटमेंट उन्होंने शुरुआत में डॉक्टर के सामने दी थी वो स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज हो जाती है। और जब मैं पुलिस कस्टडी में पेश होता हूं तो मैंने इतनी बार पुलिस वालों को बोला कि मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूं, इस दिन मैं दूसरी जगह मूवी देखने गया हूं। पर उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए, उन स्टेटमेंट्स को इग्नोर करते हुए, उस फुटेज को इग्नोर करते हुए मुझे ज़बरदस्ती इस केस में फंसाया जाता है और मेरी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रिंस के केस में इग्नोर करी गई ये सारी बातें कि भाई CCTV फुटेज, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस, फादर की, मदर की। इन द अर्लियर फादर सेड आई एम द आई विटनेस ऑफ द केस. Victim said that earlier accused has committed crime with her. After that she changed her statement. These facts were ignored by the trial court. लड़की वाले कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं इन केसेस में। आप फॉर एग्जांपल मेरे केसेस में देखें तो ये मेरा घर है और मेरे केस में जो उन्होंने स्पॉट लिखवाया है, अब तो ये मकान पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। पहले 2013 में जब मेरे खिलाफ लिखवाई उन्होंने, उस टाइम पे ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी
और यहाँ पे बिल्कुल ओपन एरिया था। एफआईआर में जो लड़की ने बयान दिया है, उन्होंने बयान दिया है कि वो जो स्कूटी खड़ी हुई है वहां से लेके मैं यहाँ तक उस लड़की को स्पेशली 200 मीटर मुश्किल से होगा, वहां से मैं उस लड़की को बिठा के लाया स्कूटी पे, और एक लड़का पहले से यहाँ मौजूद था। और मैं और किसी जगह नहीं जाता हूँ, बिल्कुल अपने घर के बिल्कुल सामने, आप गैप देख लीजिए कितना है, और मैं यहाँ पे उसका रेप करता हूँ। जब मेरे को कन्विक्शन सुनाई गई उस टाइम पे बिल्कुल अंदर से टूट गया था मैं। बिल्कुल समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया, इतने सबूत होते हुए भी, इतने एविडेंस होते हुए भी मेरे पास जब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जैसे मेरे को कन्विक्शन हुई, पापा को एक ओवर मेजर अटैक आ गया, तो मतलब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे कि उनका एक अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करा सके हम। प्रिंस के जेल जाने के बाद इसके जिया जी भी एक्सपायर हो गई। फिर इधर इसके पापा बीमार रहते थे। मैं तो यही सोचती थी कि पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म कही होंगे, उनकी सजा मिल रही है। अब तो कुछ किया ही नहीं, बिना करे ही इतना भुगतना पड़ रहा है। मेरे जेल के अंदर जाने के 5.25 साल के बाद जब मेरी वो चीज जज साहब के सामने आई, तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया। जो एजी था, एडवोकेट जनरल था हाई कोर्ट में, जो लड़की वालों की तरफ से केस लड़ रहा था, तो उससे एक ही क्वेश्चन किया कि इस लड़के को किस बेस के ऊपर जेल में डाला हुआ है। तो एडवोकेट साहब के पास कोई जवाब था नहीं, सरकारी एडवोकेट के पास। तो उन्होंने जज साहब ने बोला कि हम इस केस को दोबारा से नीचे ट्रांसफर कर रहे हैं सेशन कोर्ट के पास। तो मेरे को जज साहब ने रिलीफ दे दिया वहां से 5.25 साल के बाद, कि मेरे को बेल दे दी उन्होंने वहां से हाई कोर्ट से। मेरा केस का टाइम बूम कर दिया था हाई कोर्ट ने कि 3 महीने के अंदर इस केस का डिसीजन देना आपको दोबारा से। जब मेरा केस यहाँ पे सेशन कोर्ट में आ गया, तो मैंने वो सीसीटीवी फुटेज जज साहब के सामने रखी एडवोकेट के जरिए। तो जज साहब ने एक क्वेश्चन किया कि ये सीसीटीवी फुटेज पहले इस केस में लगी है या नहीं लगी है। तो वो चीजें जो पहले जज थी, लेडीज जज थी, उन्होंने वो चीजें ऑन रिकॉर्ड ली नहीं, कभी वो मेरी चीजें देखी नहीं सीसीटीवी फुटेज। तो जब मैंने वो फुटेज जज साहब के सामने लैपटॉप में रख के चलवाई, तो जज साहब ने एक ही बात बोली कि ये लड़का इस टाइम पे यहाँ पे है, तो इस केस में इसको कन्विक्शन कैसे होगी। जज साहब ने एक ही बात बोली मेरे को कि मैं 5.25 साल वापस तो नहीं लौटा सकता, पर मैं आपका केस एक्विट कर रहा हूँ यहाँ पे।